Good evening, friends. We are at all-time high. Markets are booming. Portfolios are not doing well. I still maintain Nifty will be 12,000. Just one simple reason. This kind of P ratios are unsustainable. It's okay if 1 year or so, but in the long run, equity per se is valued on a fundamental basis. It's not valued on euphoria, emotions, money, nothing. Fundamentals only work. So I'm of the strong belief that this kind of P ratios are unsustainable, unsustainable, unsustainable. Now, I had put out a tweet wherein I mentioned certain stocks will go down to 30% or more. Means they will be 30% from here. I received 111 uh, comments, out of which very few people asked what is the reasoning. Otherwise तो तू दारू पिया है, बेवड़ा है, weed है. Somebody said I'm Rakhi Sawant of stock market. अरे यार, मैं कैसे राखी सावंत बन सकता हूँ? वो छोटी है मेरे से, बहुत छोटी है. और मैं राखी सावंत को तो छोड़ो, मतलब एक क्या तरीका है लिखने का लोगों का. ठीक है, चलिए मान लिया. फिर एक जन ने लिखा यू लुक लाइक अ मंकी. यार, असल में तो हम सब मंकी की पैदाइश है ना. तो मैं मंकी जैसा दिखता हूँ तो कौन सा बड़ा बात है. एनीवे, माय रीजनिंग कि ये जो केमिकल स्टॉक्स हैं 50, 60, 70, 80 पी, वो कोई पागल आदमी ही दे सकता है इतना पी. कोई सेंसिबल आदमी जिसमें थोड़ा सा भी अक्ल है वो 4-5 से ऊपर नहीं देगा पी. वो चाइना +1, यूरो +1 का फालतू का बात है. इतना पी नहीं हो सकता है. नेवर. एंड इफ यू आर गिविंग सो मच ऑफ पी, it's going to be your funeral. I can give it in writing. One thing I have, which you all don't have, I have patience of a vulture. I will keep on moving above you until you are dead. And secondly, I have money power. I can wait. 5 years, 6 years, 7 years. I bet anybody can wait for more than a day, whereas I can wait for 6 years. So don't follow me as such. This is my view. And if you are heavily invested into stock market, believe me, in a month or two before the budget is on 1st of February, some capital gain rationalization is coming. Short term will be taxed at normal rates. Then you see what will happen to the stock market. Don't. And this time,
The GST collection 1,46,000, 1,46,000 lakh crore, 1.46 lakh. That is after buttermilk and dahi and all that. Hmm. So where is the bloody growth? Where is the growth? You are taking up the stock market, okay, but then what? Where is the growth? Another thing, this is an eye opener. Everybody over here, listen to this carefully. The GDP of second quarter ending September was 38 lakh crore. 38 lakh crore. GDP of first quarter was 36 lakh crore. So you added 2 lakh crore. And stock market you added how much? From 253 to 290. Are you crazy? Are you mad? See, basically, I'm a macro guy. I'm not too much of a micro player. But this kind of figures, and if you, okay, markets are going up for sure. But who's buying? Momentum buying. Bill opens at 85, closes at 91. I don't know what happens. So, this is a momentum market. And on GDP, if we take all the 4 quarters and we are liberal with some estimates, then it would be 160 trillion rupees. And we have a market cap of 285 trillion rupees. How? How? Now, I do understand, you don't understand, but this will have a, definitely it will submerge, it will converge at a rate of 70 to 80% of nominal GDP, not real GDP. These numbers I give you were real GDP. Nominal GDP is plus interest. Sorry, plus inflation. So if you take it 10, 10, 20, 30, whatever you want to take, say 250 trillion, then also 250 trillion, 70% if you take. India's story is great. Calculate how much will be your market cap. So we are riddled with lot of problems, lot of headwinds. But why the markets are going up? Because there is a lot of inflow of EPFO and SIP money. Now, SIP money, mutual funds, so they don't see any opportunity, so they buy Paytm and PB, Infratech, what not. Now, all these shares are good, according to me, but for a year or so. Thereafter, they will become all chinko pinko. So, that SIP money is also going to go down the drain. Another thing is, it's very unfortunate that lot of rigging, pumping is happening in our market, which is all right. For me, it is all right, but for the general public, it's very bad. Now, I'm
very bearish on IEX. I don't know how much quantity short. I don't account. It's valued at 13,500 crores, and max it will earn 280 crores a year. It's a business where just revenue, some little expenditure, and net profit. Now, this kind of business should command a P of 4, 5, 6. But no, over here they command a P of 40, 45. In the same field, there is a company called PTC, Power Trading Corporation. It's quoting at 90 rupees. Its P is around 6.5. The net profit is double than IEX. It was the promoter of IEX. 30% of the business of IEX is given by PTC, and its market cap is 2,800 crores. And to top it all, every year from now on, it will give a dividend of 7.8 rupees. Mark you, 90 rupees, 7.8 rupees, 2,800 crore market cap. I'm buying it. As much as available, I'm buying it. So, why I'm giving you this example is that there is no dearth of opportunity in the markets if you look for it. But if you go for the poster boys like SRF and SL, believe me, you are free to abuse me. I don't care a damn. ये सब तुम्हारा पैसे का पानी हो जाएगा बॉस. आप देखो 2000 के पहले क्या भाव था इसका. 2000 के पहले, कोविड के पहले क्या भाव था वो देखो, समझो. ऐसा ही मत बोलो चिच्चा क्या दारू पीता है, चिच्चा क्या वीड पीता है. अरे मैं तो सब पिएगा. So with this, I think there is one more point. Yes, our market is outperforming the world markets. Great. I am an Indian. I feel proud of it. But as an investor, I am shit scared. Anything which goes up like 50% in 1.5 years, you have to be scared in the market. You can't be just wishing away that nothing will happen. And believe me, this December month is going to be so treacherous and painful. Two things more. The cost of carry is almost 1.25% per annum. No, 1.25% per month. Now, you buy a share, so in futures, so you have a cost of 1.25. Brokerage, STT, this, that, do, down, and renewal. So, approximately your cost of fund, including the interest on margin money you pay, is almost 21% interest.
Now, do you think you are able to generate 21% per annum? It's a losing game. Every month on an outstanding of 1,50,000 crores, you calculate 2%, 3,000 crores down the drain. For the full year, 36,000 crores down the drain. It's a losing game. If you buy and hold, it's your funeral. Take it from me. Buy and hold policy doesn't work. Yes, you can do in out, that's okay. That everybody does. But if you buy and hold, you are finished. Secondly, this US markets, their P is very less compared to ours. If we knock off NTPC, ONGC and all that, our P ratio would be around 30. I assure you, I guarantee you, Nifty might go up or whatever, but you will not earn any money year after. Matlab ye, I'm not saying you won't earn money. If you would have bought Bell today, you would have done money. But on the whole, on the whole market, you will not make money. When Maruti results came, it touched a high of 98.50, and and today after a month it's 8,900 or whatever, I don't not know. So how are you making money? सी बोलने को बहुत आसान है, अरे मैंने बनाया, अरे नहीं होता है यार, पैसा ऐसा नहीं बनता है। हम 45 साल हो गया, झक मारता है क्या इधर? हम समझता नहीं क्या पैसा बनाना सट्टे बाजार में मुश्किल काम है। इट्स नो फ्री लंच, नो फ्री मनी। हाँ, एक एक दौर आता है कि आप पैसा बना लेते हो, अगर संभाल सकते हो तो ठीक है, वरना वही लोन ये वो। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट। ये बाजार में से बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, और पैसा वो बनाता है जिसके पास में पेशेंस है। और पैसा वो बनाता है कि जिसके पास में इंफॉर्मेशन है। वो कुछ है, धन न ब ब ऐसा कुछ है। और एक जो होता है तारवनी वाला, मतलब वो जॉबर टाइप। तो प्लीज डोंट गेट lured by the screenshots and following and all that। और फॉर्चुनेटली मैं आज देखा मेरे 18,000 फॉलोअर है। मैंने फॉलोअर के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब अपने आप आते हैं। ओ वो भी डाला नहीं कि 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज वन थिंग, वॉट आई एम, हमसे दुनिया शुरू होती है। हम बोलते हैं ठीक है, और 15 महीना गलत हो सकते हैं, और ताकत है मेरे में, बट it is impossible for you all to prove me wrong। 100% बोलता हूँ, बहन चो 12,000 नहीं आवे ना, अब मेरा नाम शरद नहीं,
एक क्या बाजार है क्या? 40 का पी, 50 का पी, एक खाने का बात है क्या? नॉनसेंस जैसा बात करते हो सब लोग। एक लाइन खींच लिया, 19,000 हो जाएगा। एक लाइन खींचा, 24,000 हो जाएगा। अरे स्टॉक मार्केट है, एक कोई खेले का चीज नहीं है। यहाँ एक शेयर लेने को भी पैसा लगता है। और आजकल तो कोई लॉट भी नहीं खेलता है, मैं देखता हूँ ना। वॉल्यूम इतने कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है। ये हकीकत है। ये जो अपने बड़े साहब है अनंत आचार्य, पूरा दिन लाइन खींचते रहता है। पूछो ना उसको कितना तकलीफ होता है। आता है पैसा, पर बहुत तकलीफ से आता है। उतना काम अपने और कुछ करेगा तो और पैसा आएगा। और मेहरबानी करके सबको रिक्वेस्ट है, दीजिए मुझे गाली, दीजिए, आपका दिल ठंडा होएगा। लेकिन फिर भी बोलता हूँ, ये सब शेयर है ना, 30% हो जाएगा। SRF हो, पोली कैब हो, ये हो, ये चिंकू पिंकू शेयर है। ये स्टोरी वाले स्टॉक है। ये 2000 बाद में आए हैं। जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जितने भी गंवार लोग हैं, उनके लिए ये शेर है। छाती से लगाओ, प्यार करो। इंडिया मार्ट, ये 10 रुपया नहीं हो जाएगा ना? मेरा नाम शरद नहीं। अभी मैं बोलता हूँ आपको, ये जो मैं बोलता हूँ ना बार बार कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है मेरे में कुछ इंट्यूशन, समझो कुछ है मेरे में। एक बार अनिल भाई को बोला, अनिल भाई अपना हिसाब है, दे दो। बोले चल पागल, तेरे को कौन देगा? मैं बोला ठीक है, तू नहीं देगा ना, दिखाता हूँ तेरे को। तो मैं बोला देख, अभी तेरा भाव 1400 है। माँ कसम, 100 रुपया तक नहीं लाऊंगा ना तो मेरा नाम शरद नहीं। बोले चट्टा। मैं करके दिखाया उसको। ये है मेरी पहचान, ये है शरद शाह। तो फालतू में ट्रोल मत करो। और मेरे पास में गवर्नमेंट में बहुत ही पहचान है। वो वो किसी का भी नंबर निकालना है, कुछ भी है, इजी है मेरे लिए, बहुत इजी है। एड्रेस निकालना इजी है। वो एक जन ने गाली दिया था फोन पे, 2 घंटे में उधर आदमी पहुंचाया था उसको। बट ये सब में क्या मतलब है कितने के पीछे फिरूं? मैं तो बोलता देव ना, गाली देता है तो याद तो रखता है। हेट्रेड इज मोर पावरफुल देन लव, आई बिलीव इन दैट। सो अभी भाई बोलिए। समझ भाई, आपको कुछ बोलना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो समर्थ भैया का मैसेज आया था, उनकी वो टेक्निकल साइड से कुछ इशू है, तो वो बोल रहे थे कि कोर्स से हटा दे उनको। हाँ, अभी कैसे हटा दिया? चलिए, आशीष भाई बोलिए। चलिए, गए आशीष भाई गए। भगवान का नाम लिया आशीष भाई ने। आप सर मेरे को बना दे कोर्स, में मैनेज कर लूंगा, आप बोले तो। नहीं नहीं, आ गया, समर्थ आ गया। Sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, rightly said, we are right now in a juncture कि जहां पर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के साथ है ही नहीं, बुल्स के साथ है ही नहीं रिस्क रिवॉर्ड, इफ यू आस्क मी। तो
जिस तरह से बाजार का वॉल्यूम घट रहा है अभी ओवरऑल, प्लस जो मार्केट में एक तरफ की तेजी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आ रही है, उस हिसाब से आई थिंक द बुल्स आर मेंटेनिंग ए विंडो ड्रेसिंग जो भी हो रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट इज ऑन टेंटर हुक्स। एंड कभी भी इन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम कुछ भी यानी नेगेटिव न्यूज आता है, या गवर्नमेंट के साइड से ऑन द पॉलिसी साइड, ऑन द बजट साइड, ऑन द इलेक्शन साइड कुछ भी आता है, तो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर ए जस्ट ए सीजर को, जैसे वो बलून लटकता है ऐसा एक नॉर्मल कट मिला, तो इट कैन फॉल वेरी हेवीली सर। एंड वी जस्ट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, इन ए शॉर्ट में क्रिस्प मैनर में यही चीज है अभी। सेकंड थिंग अभी सर ओवरऑल आप देखोगे तो पीपल आर कंपेयरिंग अवरसेल्व्स टू द यूएस मार्केट, तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट का वैल्यूएशन और अपना वैल्यूएशन, बिकॉज इट इज अ फ्री फ्लोट मार्केट एंड 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर बिगर देन अस, तो उसका जो नेचर है, जो नेचुरल वे में बिहेव करता है, अपना मार्केट इतना बिहेव उस तरह से नहीं करता है। अपना जीडीपी का फिगर अगर उस तरह से यूएस का आता, तो यूएस को तो नेचुरल रिएक्शन में कभी भी डाउन होता। आज के दिन में जो फिगर्स आए हैं पॉजिटिव, तो मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट रेट विल बी इंक्रीज्ड वेरी इजीली, द इंटरेस्ट रेट्स। तो अपना जो मार्केट है, अपना भी जीडीपी फिगर आया, अपना भी डेफिसिट फिगर आया है, ऑल टाइम हाई पे आया है, बट मार्केट हैज नॉट रिएक्टेड एनीवेज। तो मेरे हिसाब से सब जो एक साथ अभी ने जैसा इकट्ठा किया है सब न्यूज को, और एक ही टाइम पे एक ही दिन में ऐसा लग रहा है कि सर ब्लो ऑफ हो जाएगा डाउन साइड में सर। दैट्स इट सर। और सर एक ये अपना हैंडल है वन रिकॉर्डिंग स्पेस। सर जी, आप जो हमारा स्पेस को आप यूट्यूब पे डालते हो और यू आर अर्निंग आउट ऑफ आवर स्पेसिस, प्लीज स्टॉप दैट। तो अपना जो शरद सर का जितना स्पेस आपने यूट्यूब पे डाला है उसको डिलीट कर देना। वन रिकॉर्डिंग स्पेस, इफ यू आर हियरिंग अस, तो आपने सब वहां पर डाल दिया है यूट्यूब पे सभी स्पेसिस पे। यूट्यूब पे कंप्लेन कर देना समर्थ भाई, he will lose his channel also. नहीं नहीं, Just complain because it is copyright infringement. It is Sharad bhai's space, so you have full copyright to it. If somebody is doing it unauthorized, just give a complaint to YouTube directly. Don't request. ये request करने से कोई सुनता नहीं है नहीं अपने नहीं, देश वो में। तो मैं कर दूंगा, तो ठीक है। वैसे भी हाँ आनंद जी, आई एम माई सेल्फ ए लॉयर, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई कैन इश्यू इट। हाँ, बस यूट्यूब पे कंप्लेंट होगा वो इंस्टेंट चला जाता है, आपको 6 घंटे में आपको रिस्पॉन्स मिलता है यूट्यूब पे। ठीक है सर। मेरा भी मोनेटाइज्ड है। आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव टुक माय कंटेंट एंड पोस्टेड द मेनी टाइप से दिस इज कंटेंट पोस्टेड ऑन माय दिस वन एंड दिस इज द आई हैव फुल कॉपीराइट टू इट एंड आई हैव नॉट गिवन एनीवन परमिशन, इंस्टेंट उसका चैनल ही बंद हो जाता है। ठीक है सर, करेक्ट है। ठीक है। हाँ। या आनंद जी, आप भी बोलिए सर। आई एम डन विथ। After a long time, I am feeling much better. I had some surgery, so I was a little bit out of action. But मेरा view थोड़ा अलग है. This market right now currently is कैसे बोले, किसी को पसंद नहीं आ रहा है ये मार्केट ऊपर जा रहा है, but still the market is going up. There are a lot of people on the sitting on the sidelines जो नीचे आए तो खरीदो वाले बहुत है अभी भी. So, and having taken the breakout, this market I feel is going to trap the bears once again. It may come down to 15,000, 18,600, 500, a little bit down, and then it will rally off again to newer highs above 19,000. So should be reached quite rapidly. But this is not the time I feel for us to think bearish, irrespective of all the fundamental inputs whoever are giving which are sounding bearish. The technically it is not looking so. Yes, the volumes are a little lower at this point, but the way it took off the breakout at 18,600 was with good force. So I expect there is still a little more left in the market.
So just need to watch. But if 18,200 breaks, then I will again get into a bearish mode. Till then, I am not getting into a bearish mode. In fact, I've been giving buy calls all through the day today. After a long time, I was very active today with my new screener. So लगता तो है there is more steam left and there is more bad news coming. This market is likely to head further up because market does not turn its trend with the news. News is never a reason for a market to change its trend. It rarely, if ever, happens. The change in trend will come on its own in the market, and when that comes, everything will sound hunky dory. Everything will sound look really good. But right now, having taken out 18600, it doesn't look like this will come down so quickly because it has scaled up quite a lot and quite swiftly. Pattern wise, it is looking like a B wave of a flat. So the B, I was expecting 18600 पे selling आएगा फिर से, but since that did not come, we can go all the way up to 19400, 19800 levels before it starts turning down. I am looking maybe budget तक भी ऊपर जा सकता है. Gujarat elections notwithstanding, that Gujarat elections, the election result is so close. A trend change here doesn't make sense for the market in the pattern because news should come much later than the trend change, and it is too close now for to ask for a trend change. What happened today? We had 8 days of rally, 8 days of rally, 8 days of consecutive higher closes. So market had to let off some steam, which is what happened today. And ultimately, at the end of it, we retraced back almost 50% of the fall. So Monday morning, I again expect a higher Nifty, irrespective of whatever the Dow is doing right now. Anand, Haji. I totally disagree with you. Yes, sir. तभी तो मार्केट बनेगा. Yes, and this is a healthy, मतलब healthy way of discussing. Right. See Yes, sir. why the markets will not go up. Okay, I'm according to me, four of five of one or two is opening up. Hello. What was that? What was that? Come again? 4 of 5, 1 का 2 is opening up. Okay. अरे नहीं रे, अपने को घंटा समझता है वो. इसीलिए ओके बोला, और क्या बोलूं? नहीं, no. Why I'm saying this? Because on Monday evening there will be exit poll. A lot would depend on it. Sirji, here can I add something? Yes, please. See, there are two things here. One, BJP will come to power. If it does comes to power, status quo है, कोई change नहीं है. If it doesn't come to power, if for example Congress or AAP wins with a good majority, okay, they need to win it with a good majority because otherwise it is very difficult for them to form the government. So even if they win, that will only add to more fuel because the shots will get so aggressive here, and this is not the level for the shots to get aggressive. Forget short. There are no shorts in the system. अगर सिस्टम में शॉर्ट होता, अरे सर, सिस्टम में शॉर्ट होता तो 150 पॉइंट प्रीमियम चलता ही नहीं. वो छोड़ दो आप. ये मार्केट जो है किसी भी टाइम पे 50-50 है. अगर किसी का बाई है तो किसी का सेल खड़ा ही है उसके ऑपोजिट एंड पे. ये नहीं, नो, आई डोंट अग्री विथ यू. आई डोंट अग्री विथ यू. ओके. नहीं, जिसका सेल खड़ा है ना, वो आर्बिट्राजर है. Why don't you forget that? And also another thing, अगर जो आप बोलते हो कि कांग्रेस का कुछ मेजोरिटी या कुछ अच्छा सीट आता है, तो इट इज अ रेफरेंडम ऑन 24 elections because
गुजरात इज द ओनली हिंदुत्व स्टेट, और अगर हिंदुत्व वहां खत्म होता है तो फिर देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. Okay, let's agree to disagree. ठीक है. दीपक भाई आए, दीपक भाई का सुने प्लीज. दीपक शर्मा इज लिस्टिंग. हाँ भेजा है रिक्वेस्ट. हाँ हर्ष भाई बोलिए. हर्ष भाई. आनंद म्यूट योर माइक. हर्ष भाई आप माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए. छोड़िए. ऋषिकेश भाई बोलिए. गुड इवनिंग समर सर. गुड इवनिंग शरद सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग भाई. आनंद सर तो बोल रहे हैं कि अभी बुल मार्केट है, बट अपना व्यू ये है कि कल ही बुल मार्केट खत्म हो चुका है और हाँ कल मैं का तुम्हारा ट्वीट पढ़ा. कल का हाई निकलना मेरे को मुश्किल लगता है. कल 1 बजे जो हाई था वो हाई खत्म हो गया. अभी नहीं लगता कि कल का हाई निकलेगा.